Hello everyone, very good morning. So I'm back with our daily current affairs session. Today, as always, we have some very important news which we are going to discuss and followed by some MCQs which are also relevant for your exams. So without any delay, let's just begin today's session. Okay, so the first news today that we have is related to a protest, basically, which is done by the bishnoi activists, and they are protesting against the felling of Khejri trees for the installation of 8 solar power plants in Jodhpur district. Okay, so you can see the images that how they are protesting at the site, and there is a bulldozer that you can see is which is burying the trees. So let's just go into the details. So in this particular news, we will try to understand uh, the importance of Khejri tree, followed by what is Bishnoi movement, because this whole protest is done by Bishnoi activists. So we will have an idea about what was Bishnoi movement. एंड वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, सो उसके लिए भी हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करें. सो दिस खेजरी, दिस इज द साइंटिफिक नेम, इज अ स्पीशीज ऑफ flowering trees in Fabaceae, which is the pea family. Okay, it is also called as ghaaf in the Middle East, chongara in Uttar Pradesh, and jami in Telangana. So these are the different names. ऐसे questions कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसी पर्टिकुलर चीज के लिए कोई ट्री हो गया या कोई खाने की चीज हो गई या कोई प्लेस हो गया. जैसे कई बार रिवर्स भी होती है, जैसे एक रिवर के डिफरेंट नेम्स होते हैं, डिफरेंट एरिया, डिफरेंट कंट्री. सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दें. The tree is found in the dry regions of Rajasthan, Delhi, Gujarat, Punjab, and Madhya Pradesh in India, and also found in Afghanistan, Iran, and Pakistan. So ये जो पेड़ है वो कहाँ पाया जाता है? ये ड्राई रीजन्स पे पाया जाता है, जैसे राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, इंडिया में. और इसके अलावा अफगानिस्तान, ईरान एंड पाकिस्तान ऐसे देशों में भी पाया जाता है. It is regarded as the kalp vriksha of the desert and also as the king of the desert and the wonder tree for its ability to survive in extreme desert type conditions. So this paragraph is also very important. एक तो ये kalp vriksha of desert कहा जाता है. You might have this type of question कि कौन से tree को kalp vriksha of desert कहा जाता है, और ऑल्सो इसको किंग ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है, वंडर ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि एक्सट्रीम डेजर्ट कंडीशन जो होती है, एकदम ड्राई कंडीशन, जो रेगिस्तान होता है एकदम, उस वाली कंडीशन में ये आराम से सरवाइव कर सकता है ये ट्री. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज वंडर ट्री. ओके, now the tree plays a key role in preserving the ecosystem of arid and semi-arid area. And because it is able to survive in those areas, एकदम dry area में, तो ये जो tree है वो काफी important role play करता है in the in preservation of the ecosystem of these areas. Okay, और ये state tree है राजस्थान का, very important. ठीक है, so this is the state tree of Rajasthan. Khejri is a nitrogen fixing tree and it enhances the fertility of the soil. So ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है और जो सॉइल की फर्टिलिटी है, जिसको हिंदी में उर्वरकता बोलते हैं, उसको बढ़ाता है. तो ऑब्वियसली इन दोज एरियाज, डेजर्ट एरिया में ये बहुत ही एक अच्छा काम करता है ये ट्री इन मेंटेनिंग द इकोसिस्टम. The leaves of the tree have a high nutritive value, which are locally called noon, and the bark of the tree is used in treating scorpion and snake bite. So जो इसकी छाल होती है उसका तो यूज किया जाता है जो बिच्छू और सांप के काटने के लिए,
और इसकी जो लीव्स होती है उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, हाई जो है न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है, और इसको लोकली लूंग बोला जाता है। सो दिस वाज अबाउट दिस ट्री, खेजरी ट्री, जिसको काट के जो सोलर 8 सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन करने का काम किया जा रहा है जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, जिसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं द बिश्नोइज। नाउ हु आर दीज बिश्नोई एक्टिविस्ट? तो अब हम बात करेंगे बिश्नोई मूवमेंट। ओके, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर मूवमेंट, कि कब स्टार्ट हुआ था, क्या था, क्या एम थे, किसने स्टार्ट किया था, ऑल दोस थिंग्स। So this movement was actually it is one of the first organized proponent of eco conservation, wildlife protection and green living. So it is basically related to eco conservation, wildlife protection and green living. Bishnois are considered the first environmentalists of India. Very important. Okay, who are the first environmentalists? Bishnois of India. They are born nature lover. So वो पैदाइशी ही नेचर से प्यार करते हैं. In the history of environmental movements, this was the movement that for the first time used the strategy of hugging and embracing trees for their प्रोटेक्शन. सो ये जो एनवायरमेंटल ये जो मूवमेंट था, बिश्नोई मूवमेंट, ये ऐसा एक एनवायरमेंटल मूवमेंट था, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, जिसमें कि ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई गई थी, जैसे कि ट्रीज को हक करना, गले लगाना, ट्रीज से गले लगना, उनको एक्सेप्ट करना, ऑल दिस थिंग्स, ओके, उनके प्रोटेक्शन के लिए. The famous Amrita Devi's movement is considered to be among the pioneering efforts of environmental protection. So she is the lady who's proponent or who is responsible for this movement initially. Amrita Devi. Okay? King Abhay Singh of Jodhpur in 1730s, when building his new palace, ordered his soldiers to cut down the trees for wood in Khejri village. So actually क्या हुआ था, जो उस टाइम के किंग थे अभय सिंह ऑफ जोधपुर, 1730s में उन्होंने अपना न्यू पैलेस बनवाने का सोचा, एंड उन्होंने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि वो जितने भी विलेज के आसपास के ट्रीज हैं जहाँ पे वो अपना पैलेस बनाना चाहते हैं, उन सबको काट. So that time, as a symbol of protest, Amrita Devi stood against the soldiers and fought for the life of the trees by clinging onto them. So when she took this step and she started protesting against the tree. Her three daughters, Ashu, Ratni and Bhagu, also stood by their mother. So not just her, but her three daughters were also involved in this particular movement. Supporting them, the other people of this community also stood up for the trees and wrapped their arms around the trunk. And not just she with her daughters, but also other people from the community, they also took part in the movement, and they also hugged the tree when the soldiers were coming to cut the trees. Okay, yeah. Now the soldiers continued to axe the trees down without paying heed to the request of the people. Or just soldiers taking it, they just continued cutting the trees. The prime reason behind opposing tree cutting was embedded in the cultural belief of the Bishnoi community, as described in the principles of this sect, advocating the protection of trees and wildlife conservation. So this basically all this happened because their cultural belief is that कि जो trees हैं
they must be protected. जो wildlife है उनका conservation करना है. So it is their cultural belief, and that is why they you know had this thing in their mind, and they opposed the cutting of the trees. Another reason was immediately related to their rural livelihood, as they depended on the forest for the supply of fuel, wood, and fodder. Also, because in the rural area, people are very much directly dependent on nature for their livelihood. So वो उस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते थे, लकड़ियों से जो वुड होती थी वो फ्यूल की तरह यूज करते थे खाना बनाने में और रोस्टिंग और चारा वगैरह के लिए. ऑल दीज थिंग्स वर वेरी मच बेनिफिशियल फॉर देयर लाइवलीहुड. सो ये भी एक रीजन. बिश्नोई फ्रॉम खेजरी and other villages came to join this agitation and hugged the Khejri trees one by one to protect trees being cut at the cost of their head. So what they actually did, not just that village, but all the villagers from the nearby village, they just came and worked hard to protect the trees. उन्होंने उसको hug करना start किया tree को, and they were ready to have like उनका गला कट जाए ऐसा मतलब but tree नहीं कटना चाहिए. This was their protest against. So in this movement, 363 Bishnois laid down their lives for the protection of the Khejri trees in the Khejri village of Rajasthan. So in this protection, 363 people actually had to give away their life in order to, save the trees. This movement has left an indelible mark on the memories and a long-lasting effect of the psyche of the people. And obviously, this will, have a long-lasting effect on people's mind. Okay, so with this, we come to an end. We have now a very good idea about the properties of this Khejri tree. कहाँ पे पाया जाता है? What are the different names of this particular tree? And ये state जो राजस्थान state है उसका state tree है. All the other things we saw. Then we saw about Bishnoi movement, कैसे start हुआ था, कहाँ start हुआ था. All those things we saw. Now let's just come to another news, which is also very important from. इसमें एक बहुत छोटी सी चीज है जो that we are going to learn. But what is that? Let me just tell you. That is about kangaroo court. So वो है एक छोटी सी information which we need to learn from our exams perspective. So what is actually the news? A man was allegedly burned alive in Nagaon district of central Assam after a kangaroo court adjudged him guilty for murdering a 22-year-old woman. So this man was allegedly burnt alive. उसको जिंदा जला दिया था नगांव डिस्ट्रिक्ट में, जो कि सेंट्रल असम में आता है, इन कंगारू कोर्ट, जहाँ पे वो गिल्टी फाउंड किया गया था जिसने फॉर मर्डरिंग अ 22 years old woman. ठीक है, तो व्हाट इज अ कंगारू कोर्ट, वो हमें एक्चुअली इस न्यूज से देखना है, विच इज इम्पोर्टेंट. A kangaroo court refers to one that has been set up without being recognized by any law or justice. These have no official backing in the territory. So, एक जो kangaroo court होता है वो actually किसी law से नहीं बनाया जाता, मतलब that is not a legal court. ऐसा नहीं होता है, ठीक है. तो अपने मन से लोग बना लेते हैं. These courts do not necessarily follow the procedures established by law and the due process of law. तो ये जो courts होते हैं ये they do not follow the procedures जो भी law legal procedures होते हैं जो कि legal bodies के द्वारा बनाए जाते हैं, वो सब ये follow नहीं करते. They have their own established laws भी नहीं बोल सकते, मतलब अपने customs होते हैं. It is named kangaroo court as their proceedings are convenient quickly and also because their justice proceeding take place by leaps
like a kangaroo, which suggests that these proceedings ignored material evidences. So, ये जो कोर्ट्स होते हैं अपने हिसाब से दे टेक द डिसीजन एंड बहुत ही क्विकली इनके डिसीजंस होते हैं ऑल दीज थिंग्स. तो कुछ भी ऐसे लीगल नहीं होता है इनका, जो अपना खुद से डिसाइड करते हैं, अपने आप से बना लेते हैं लोग ये कोर्ट्स. ओके, सो दिस वाज इट. कंगारू कोर्ट क्या है, नाउ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. So this was a very small news, but I thought to bring it because मुझे लगा ये छोटा सा concept बड़ा ही important रहेगा, so I brought. Now with this we come to an end to this small news. Now let's move to the another one, which is also very important. Okay, so this is about the renewable energy, which they're saying in this particular article. What we are going to understand is that renewable energy will use of actually renewable energy will reduce the revenues which is being collected. So let's understand now. A study by the International Institute of Sustainable Development suggests that the transition from fossil fuels to renewable energy sources would have financially challenges for India and other major developing countries like Russia, Brazil, China, because of their high reliance on revenue from fossil fuel. क्या कह रहे हैं कि एक इंटरनेशनल स्टडी हुई, ठीक है, which is by International Institute of Sustainable Development, and उसमें एक सजेशन आया कि जब फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का यूज शुरू होगा तो इंडिया के लिए एंड बाकी अदर कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक रशिया, ब्राजील, चाइना, इनके लिए बड़ा ही ये चैलेंजिंग हो जाएगा, फाइनेंशियल चैलेंज हो जाएगा. बाय बिकॉज ये जो कंट्रीज हैं, जो इंडिया है, चाइना है, ब्राजील है एंड मेनी मोर, these countries are dependent very much on the revenues which is collected by fossil fuels. तो इसकी वजह से लगता है कि जो रेवेन्यू है उसमें रिडक्शन आ जाएगा. तो इतना आई होप आपको समझ में आया. नाउ लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड. सो द स्टडी पॉइंट्स आउट दैट बाय 2050, एक मिनट, overall fossil fuel revenues in Brazil, Russia, Indonesia, India and China could be as much as $570 billion, which is lower than a business as usual scenario. So this can, reduce it. The widest gap are expected to occur in India. तो ये देखा गया है कि इंडिया में गैप आ सकता है which is of $178 billion, चाइना में $140 billion and रशिया में $134. So इंडिया में सबसे ज्यादा गैप कैन आकर. So इसमें इतना ही था, ज्यादा कुछ नहीं था in this particular news. Small छोटा सा news था, but I just wanted to give you an idea about this, so I brought this. Okay, so the next news that we have today is also related to the role of roads in the productivity. Okay, so this article is basically about the important role played by cities and roads in economic development. Okay, so what is the significance of cities in economic development? Okay, तो हम एक्चुअली अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, वी आर सीइंग दैट जो सिटीज हैं वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट. क्या है, कैसे है, वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. Countries around the world have realized the importance of cities in achieving national and macroeconomic growth targets during the COVID pandemic. Okay. So this is very much self-explanatory. I don't need to say anything. A Barclays report pointed out that the absolute economic loss was likely the largest from the shutdown of Kuala Lumpur, Manila, Delhi, and Mumbai, which resulted in the losers ranging from $1 billion to $1.7 billion per week.
So can you imagine? So this much economic loss have been, you know, this is the largest that could happen, and this is because of the shutting of these cities, these big cities, which is actually $1 billion to $1.7 billion per week. Okay, so experts feel that the pandemic induced lockdown in cities adversely impacted India's goal of becoming a $5 trillion economy. एंड दीज एक्सपर्ट ये बिलीव करते हैं कि जो पेंडेमिक में लॉकडाउन लगा उसकी वजह से जो सिटीज सारे बंद हो गए, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट डाला उस चीज ने, जो इंडिया का जो गोल है कि इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, वो कहीं ना कहीं उससे हैम्पर हो गया बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन. Now, cities, through their labor market, contribute significantly to economic productivity as the labor force exchanges their labor that helps in knowledge spillovers. So, जो cities होते हैं उनके जो labor market होते हैं वो बहुत highly contribute करते हैं economic productivity. Okay, so that वो एक तरीके से बंद हो गया during those time. So according to a famous French planner, Alain Berthold, a significant amount of economic and productive activities take place in cities and their jobs. So this famous French planner, he says, जो cities होती हैं उनमें बहुत ही अच्छा significant number of economic and productive activities hoti hain in cities, so they play a very important role. Further, the larger a city's effective labor market, the greater will be its agglomeration economies and knowledge spillovers. So जितनी ज्यादा सिटी बड़ी होगी, जितना ज्यादा उसका लेबर मार्केट बड़ा होगा, उतना ज्यादा ही उसके एग्लोमरेशन इकोनॉमी होंगे, उसके आसपास के जो एरियाज होंगे वो भी और ज्यादा डेवलप होंगे. क्लस्टर टाइप का एक जो बन जाता है, बिकॉज जब देयर विल बी बिग लेबर मार्केट, तो आसपास और भी छोटी छोटी चीजें डेवलप हो जाएंगी जिससे और ज्यादा लेबर फोर्स जो है वो डेवलप हो जाएगा. नाउ importance of having better road and infrastructure. जब रोड्स अच्छी होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, तो एक तो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत फायदा होगा, ठीक है, एंड दूसरी तरफ जो बड़े बड़े बिजनेस मैन हैं या जो लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं या फिर कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं या कोई प्लांट लगाना चाहते हैं, तो ऐसे एरियाज में जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इजीली अवेलेबल होगा, बेस अच्छा होगा, तो वहां पे दे विल बी एनकरेज्ड टू डू इट. ओके, सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द कोरिलेशन बिटवीन ट्रैवल टाइम एंड प्रोडक्टिविटी. तो ट्रैवल टाइम एंड प्रोडक्टिविटी में क्या कोरिलेशन है वो इस आर्टिकल में बात किया. द ट्रैवल टाइम ऑफ द लेबर फोर्स of the workplace play a crucial role in determining their productivity in cities. ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि जो ट्रैवल टाइम होता है लेबर फोर्स का, कि वो कितने टाइम में अपने घर से वर्क प्लेस पे पहुंचेंगे, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनकी प्रोडक्टिविटी कैसी रहेगी सिटी में. The long the commute time in a city, the smaller will be its effective labor market. तो जितना ज्यादा टाइम वो स्पेंड करेंगे कम्यूट करने में, मतलब ट्रेवल करने में, अपने घर से लेके जहां उन्हें काम करना है उसको ट्रेवल करने में, उतना ही कम उनका इफेक्टिव लेबर रहेगा. Wait, give me a second. Let me just erase this. Yeah. Okay. So the travel time and the state of roads in the city has a huge impact on the health and productivity of the labor market. तो जो ट्रेवल टाइम है, रोड्स की जो दशा है कि रोड्स कैसी हैं, अच्छी हैं, खराब हैं, टूटी फूटी हैं,
सिटीज में, वो बहुत ही इम्पैक्ट करती हैं ऑन द हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर. A study on the cities in Karnataka revealed that the length of the road has had a positive effect on their city's tax base. तो एक स्टडी हुई कर्नाटका की सिटीज में जिसमें रिवील हुआ कि रोड जो है वो लेंथ ऑफ द रोड जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट करती हैं सिटी के टैक्स पे. This is because better roads ensure easy access to job and increase economic activity, thereby providing confidence and motivation to the public to pay their taxes. Because जब roads अच्छी होंगी तो easily लोग जॉब्स पे जा पाएंगे, जो लेबर फोर्स है वो अपने काम पे पहुंच पाएगी, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है इसकी वजह से वो इंक्रीज होगी. एंड इससे जो कॉन्फिडेंस है, मोटिवेशन है पब्लिक का, वो बढ़ेगा. जब फैसिलिटी मिलेगी तो पीपल विल नॉट हेजिटेट इन पेइंग द टैक्सेस. जब फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो उनको लगेगा उनका पैसा दिस ऑल इज गोइंग इन वेस्ट. So this is the thing that they are saying. Further, this study highlighted that every 1 kilometer increase in the length of the road of a city translated into an increase in the revenue of the urban local bodies by about 430 per capita. So this study highlighted that 8 kilometer increase in the length of the road in a city is actually increase in the revenue of the urban local body. और वो कितना होगा 430 पर कैपिटा. नाउ ऐसा तो है नहीं कि हर जगह हमको अच्छे रोड मिल रहे हैं. व्हाट आर द issues with the roads in the cities of India? In fact, in the biggest cities वहां पे भी आपको कहीं ना कहीं it's not difficult to find a road which is not very well constructed, जिसमें गड्ढे ना हो, जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो. ऐसा नहीं है. So you will easily find here, at least in our country. So in 2016, it was seen that the travel time to work was one of the slowest in cities like Bangalore, Delhi, and Chennai. Okay. So further, the travel time continues to increase post-pandemic as the ULBs are financially stressed and are unable to address problems such as potholes. So travel time और बढ़ता गया because of these problems. The private firms in Bangalore had warned about leaving the city and relocating if the traffic problems were not fixed, as it was impacting the productivity of their employees. So जो प्राइवेट फर्म्स है बैंगलोर में, उन्होंने एक वार्निंग दी है कि वो सिटी को छोड़ देंगी और अपनी जो फैक्ट्रीज हैं, अपनी जो फर्म्स हैं, उनको रिलोकेट कर देंगी, क्योंकि वो जो सिटीज हैं वहां पे ट्रैफिक की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है और इसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्पैक्ट होती है एम्प्लॉइज. नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? Experts feel that there is a need to develop the roads such that the commute time is shortened and also the commuting cost is reduced within a city. So experts की क्या राय है कि ऐसी रोड्स बनाई जाए जिससे कि कम्यूट टाइम जो है वो कम हो जाए पहले तो. ओके. उसके बाद जो कॉस्ट है कि एरिया को ट्रेवल करने में वो कम हो जाए एक सिटी के अंदर. अब इसके भी दो तरीके हो सकते हैं. एक तो जब अगर जो लेंथ है वो शॉर्ट हो जाएगी तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी. एक कि कुछ मेजर्स बाय द गवर्नमेंट ही ऐसे लिए जाए कि वो रिड्यूस भी हो सके. The ULSB must invest more in the development of infrastructure such as road networks, as the development of which will result in increased revenue. So they say कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान देना चाहिए. रोड नेटवर्क्स अच्छे से डेवलप किए जाएं जो कि इवेंचुअली विल गिव राइज टू revenue. Further improving infrastructure like fixing
potholes on these roads will lead to a significant reduction in travel time, which not only enhance effective labor markets of cities and their economic output, but also improve access to schooling and healthcare, which results in overall well-being of the residents. So बाकी जो प्रॉब्लम्स है जैसे रोड में गड्ढे हैं, तो ये सब चीजें अगर रोड अच्छी होंगी, गड्ढे नहीं है, कोई क्रैक्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर ट्रेवल टाइम जो है वो कम हो जाता है, बिकॉज यू डोंट हैव टू पुट ब्रेक एवरी टाइम. स्मूथ रोड है, you can ride your bike, scooter, car, anything, everything on a good pace. Okay, so that is why उससे जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा. और ये सिर्फ एक इकोनॉमिक लेबर मार्केट को ही इंक्रीज नहीं करेगा, इकोनॉमिक आउटपुट ही नहीं बढ़ाएगा, बट जो अदर एरियाज है जैसे स्कूलिंग, हेल्थ केयर, उसमें भी कहीं ना कहीं इट विल हेल्प ओवरऑल in overall development of the residents of the city. Okay, so this was it for today's news. So quickly I'll revise you through and then we will see the questions that we have today. Okay, so the first news that we have was related to the activist of bishnoi activist, जिन्होंने की खेजरी ट्री के इंस्टॉलेशन, जो खेजरी ट्रीज है उनको कटवा के इंस्टॉलेशन ऑफ 8 सोलर प्लांट इन जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रोटेस्ट किया है. So we saw about the tree, then we saw about the Bishnoi movement, then we had another news जिसमें कि एक मैन को असम के गांव में एक मैन को जो है वो जिंदा जला दिया गया, बिकॉज वो गिल्टी पाया गया कंगारू कोर्ट के द्वारा 22 साल की औरत को मारने के लिए. तो कंगारू कोर्ट क्या थे वो हमने देखा, इसकी कोई ऐसी लीगल रूल्स को फॉलो नहीं करता है, इनके अपने लॉज होते हैं, अपने खुद के ही, मतलब कोई ऐसी बैकिंग नहीं होती, लीगल या ऑफिशियल बैकिंग इनकी नहीं होती. देन वी हैड दिस रिन्यूएबल एनर्जी टू रिड्यूस रेवेन्यू. हमने देखा कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो कैसे रिड्यूस कर देगी जो रेवेन्यू है, एंड इंडिया पे इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा. इंडिया के अलावा और भी कुछ अदर कंट्रीज का देखा, जैसे ब्राजील, रशिया एंड चाइना. Then we had this particular article which was related to the road of productivity, how cities are important in maintaining good economic infrastructure, and उसके लिए roads, अच्छे roads का होना कितना important है. This we saw. कैसे ट्रेवल टाइम अगर रिड्यूस हो जाएगा तो लोगों की जो एम्प्लॉइज हैं उनकी प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज, दैट आल्सो वी सॉ. कैसे जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं वो काम कर सकती हैं इकोनॉमिक आउटपुट को बढ़ाने में, एंड उसकी वजह से अगर रोड अच्छे बनेंगे तो सिर्फ इकोनॉमिक आउटपुट ही नहीं बट ओवरऑल वेलबींग जो है सिटीजन्स की वो बढ़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज और जो स्कूलिंग है, ऑल दीज थिंग्स दे विल बी इजीली एबल टू रीच. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स वी सॉ. नाउ वी हैव कम टू आवर क्वेश्चंस दैट वी हैव टुडे. So let's just try to answer these questions. Okay, so the first question that we have this pairing method. So इसमें क्या है कि एक साइड पे हेलीकॉप्टर लिखे हुए हैं, दूसरी साइड पे कंट्री लिखी है. आपको बताना है ये हेलीकॉप्टर इस कंट्री का है या नहीं है. ओके, so AH-64E अपाची अटैक हेलीकॉप्टर, so US लिखा हुआ है. पोलस्टार यूके, CH-44 Chinook helicopter France, Mi-35 helicopter Russia. So you have to find out the not correctly matched option. तो इनमें से कौन सा correctly matched नहीं है. Options are 3 only, then 2 and 3 only, 1 and 2 only, 2 and 4 only. So you have to find out which one is not correctly matched. So I always tell you that make sure to mark the word not correctly or correctly, because इसमें हम लोग काफी बार मिस्टेक कर देते हैं. ओके, सो द राइट ऑप्शन इज बी. ठीक है, बी, बिकॉज 2 and 3 आर नॉट करेक्टली मैच्ड. अब हम जरा पढ़ के देखते हैं एक्सप्लेनेशन और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी कहते हैं. AH-64E Apache is it belongs to USA. So it is correct. 2 is not correct because Polestar or group is associated
is an advanced light helicopter developed indigenously. तो ये इंडिया का है, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में बना है, तो ये ऑप्शन गलत हुआ। 3 is also not correct because चिंकारू जो है CH-47 Chinook helicopter that belongs to US, ठीक है, so this is also wrong। और वहां पे लिखा हुआ है सॉरी फ्रांस, तो फ्रांस का नहीं है, ये यूएस का। Option 4 is also correct because Mi-35M is a multi-role combat helicopter manufacturing by Rosvertol, a subsidiary of Russian helicopter. So this is also correct because this is developed by Russia. Correct and correct. Polestar India ka hai and this is of US. Okay. So with this we move to the next question. So the next question is we have to, this is actually a PYQ in one of the exams. So consider the following communication technology. Closed circuit television, this is CCTV bolte hain, radio frequency identification and wireless local area network. So which of the above are considered short range devices or technology? Short range devices या technology की बात कर रहे हैं। Option 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3. I think आप ये आंसर कर पाओगे because ये तो पढ़ा ही होगा। Option D is correct because all of them are short range devices. Now, what is a short range? A short range device is a radio device that offers a low risk of interference with other radio services, usually because their transmitted power and hence their range is low. So उनका एरिया जो है, उनकी जो रेंज होती है वो लो होती है, तो इसलिए इसमें इंटरफेरेंस का जो रिस्क होता है वो बहुत कम होता है। सो दीज आर द फॉलोइंग शॉर्ट रेंज डिवाइसेस: अलार्म्स एंड मूवमेंट डिटेक्टर्स, क्लोज सर्किट टेलीविजन जो कि ऑप्शन में है, कॉर्डलेस ऑडियो डिवाइसेस, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है ऑप्शन में, मेडिकल इम्प्लांट्स ऑप्शन में तो नहीं है बट दिस इज वन ऑफ, रिमोट कंट्रोल, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन ये भी ऑप्शन में है। So all the 3 are correct. So option D will be correct. Okay, so with this we come to an end to our daily current affairs for today. I'll meet you soon tomorrow with another current affairs session. Till then, I request you all to keep studying and work hard. And also let me know if you have any doubt. You can just put in the comment section and I'll address that. Thank you so much, everyone, and have a nice day.